पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि किसी को भी डिफेम करना या फिर किसी के भी बारे में बुरा बोलना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट आई वॉन्ट टू शेयर द जनरल एक्सपीरियंस दैट आई वेंट थ्रू। रिसेंटली आई शिफ्टेड और उस पैकिंग एंड मूविंग का रील मैंने डाला हुआ था, बट दूसरे दिन जब अनपैक कर रहा था तब आई गॉट दिस कि मेरे गैस का जो होस होता है, द पाइप फ्रॉम विच गैस फ्लोज, वो लाइक डैमेज था. It was just that seal, that hook was broken, and as well as there was that burner जिससे फ्लेम्स आते हैं, वो भी broken था, जिस वजह से it was for a safety I need to change that burner as well as my hose pipe, and उस वजह से मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ा, वो सब करना पड़ा. But through that obviously mechanic charge his fees and everything, but for safekeeping I added single layer protection of 199 of Porter. बट मेरे पास उस डैमेज के फ़ोटोज़ नहीं थे क्योंकि मैकेनिक जब आया था तब मैं वहाँ पे नहीं था, एंड आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट फ़ोटोज़, बट स्टिल आई प्रोवाइडेड विद द इनवॉइस एंड द होस्ट डैमेज जो था वो दैट आई प्रोवाइडेड विद फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग. बट सिर्फ मेरे पास बर्नर के फ़ोटो नहीं थे. दैट्स वाई दे सेड कि दे विल ओनली कॉम्पनसेट फॉर 300, बट माई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ होल थिंग वॉज लाइक 1100. So I really was like disappointed with this because all that happened was because of the transportation. Even I applied that 199 single layer protection, still I was not getting that particular thing from your side. So that's why I'm saying to my viewer that if you find anything, you just put it in a document form, you take a photo, you take anything which will be like good representation from your side, so that porter will consider something okay. They will obviously cross check with the partner, the transportation partner, the people who transported your material. They will cross check that particular thing, and once confirmed you will get your thing. That's a really good thing. But obviously in my case I was disappointed because I was not able to take the photo, and that's why they denied something which is like a genuine case in my thing. So yeah, obviously I just want to share this experience. Again, a disclaimer, it's just not to defame anyone, just not to put anything on bad for someone. It's just my personal experience and for informational and educational content only, to aware. Thank you for watching this reel.